Hey everyone, good evening. How you all doing? Hi Shomik, good to see you. Let's give 1 minute for everybody else to join in. তারপর আমরা স্টার্ট করবো আজকের ক্লাস। খুব ছোট্ট ক্লাস করাবো, probably half an hour, 45 minutes, বেশিক্ষণ নয়। Objective is to specifically look at some of your questions and also Shomik তুমি আমাকে যেটা পাঠিয়েছো case processing এ, so I'm going to try and answer those. Hi Amir, good to see you. Let's give a few minutes. Hi, Yogesh. Thank you for joining. Let's give a few minutes for everybody to join in and then we will kickstart. IASD করছে জীবন কেটে বেকারত্বের জ্বালা, চাকরি জীবনের কাটতে রিবন, চলে এসো এই বেলা, চলে এসো এই বেলা। দিনকাল একদম ভালো না, চাকরি আজ খুবই রেয়ার, প্লেসমেন্টের দায়ভার আমরা তাই করছি শেয়ার, IASDর হাতে। Hi everyone, good evening. I hope you're all well. Today we're going to have a very short session, 35-40 minutes. Objective is threefold. তিনটে জিনিস করার চেষ্টা করছি. First, some of you wanted some questions regarding clinical research, so I want to share that with you. Some of you are applying for a job in quality assurance, so I wanted to provide you with some questions for it যেগুলো তোমরা prepare করতে পারো. And lastly, I think there was a special request from one student around being a health coach, so we will take that as well. Health coach is not generally something which is like a regular modern day job, but it's a good one. So I will discuss. It's not that যে আমারও অনেক knowledge আছে, but of course we can collectively search something, find something, and then can guide you, right? Amit, thank you for joining. Priya, Chandan, Wasim, Yogesh, thanks everybody for joining. Yogesh, I do the class largely in Bengali today because we've got lots of students who have these requirements who are from Bengal. But yes, I will flip between English and Hindi. So at any point of time, if you are not able to follow or not able to understand Yogesh and others who are non-Bengalis, please just put that on the chat and then I can pick it up. All right, Vikash, thanks for joining. Chalo, should we get started? All right, so first question that came in was from Ayan Patro. Our Ayan Patro question was that, sir, if I want to apply for a clinical research associate job, then what are the typical questions that will come in the exams, right? So let me just put up my screen. Clinical research interview questions. Okay, today I'm not going to discuss the answers. I'm only going to discuss the questions because it is for you to go back, find out, study, identify the answers, come back and give me interview, give me your mock interview, and then I will correct you that, okay, whether the answer was correct, how do you write a better answer? So we'll do all of that. And yes, of course, Chandan and Shomik, please stay till the end. I'm going to review your case processing as well. But let me give the first half an hour to the students who wants to apply for interview so that they are ready for their job preparation. Kazi Rakibul, I am good. I'm having a bit of a headache today. But yeah, I should be fine tomorrow. Thank you for asking. I hope tomrao bhalo acho. I hope all of you are doing well. Let's get started. Fine. So first thing, and this is for Ayan Patra because the question came from Ayan. So I'll quickly go to the slide. Just give me 1 second again. तो तुम्हारे मध्य अनेके आछे, आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे जो कि क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट के पोजीशंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं आपके कॉलेज में, CIPT हो या दूसरे कॉलेजेस में, अभी इसके लिए बहुत सारे
जॉब्स आ रहे हैं. सो इट इज इंपॉर्टेंट कि मैं आपको वो थोड़ा समझा दूं एंड वहां से वी विल टेक थिंग्स फॉरवर्ड. देखिए, हमने पिछले दिन क्या कहा था कि क्लिनिकल रिसर्च में जो भी काम करते हैं, whoever works in clinical research, they have a few things specific that we need to do. क्या करते हैं वो जब कहीं पे let me just fix my screen. Let's go full screen. There you go. Right, so these are the clinical research interview questions, right? तो सब पहले आपको पूछेंगे कि अगर आप clinical research organization में जाना चाहते हो, right, then what is clinical research, right? So that's number one question that you will come across. The second question that you'll come across is that clinical trial के जो अलग अलग phases है उसमें clinical research associate का क्या काम होता है. So these are the two questions. So if you see here, the first question, what it basically says is, this question basically says what is clinical research. Is this is the basic question, right? अगर आप किसी interview में जा रहे हो, then it is bound that they will ask you this question, what is clinical research, right? So you should have, जैसे I always tell you, you can go to our Instagram also and see this. Every answer should be about 30 seconds, because in 30 seconds you can speak 6 to 7 sentences. If in 6 sentences you cannot explain clinical research, 1.5 minute में भी नहीं समझा पाओगे. So very important, keep your answers short and first try to define what is clinical research. Definition मत बोलिएगा, nobody is interested in listening to a definition. It is the science of this and all that. Nobody wants to know. People want to know what it exactly is, what do you understand by it. ठीक है, so 30 second क्विकली एक्सप्लेन व्हाट इट इज. ठीक है, आप आंसर प्रिपेयर करके आइए, आप थोड़ा चैट जीपीटी कीजिए, गूगल सर्च कीजिए, किताब पढ़िए, आप आंसर प्रिपेयर करके आइए, मुझे बताइए, तो वो एक मॉक इंटरव्यू हो जाएगा. देन आई कैन करेक्ट यू कि आपकी स्टोरी टेलिंग कहाँ पे और बेहतर किया जा सकता है, कैसे आपकी जो कॉन्फिडेंस लेवल है उसको और इंप्रूव किया जा सकता है. आई एम गोइंग टू डू ऑल ऑफ दैट, बट फर्स्ट यू नीड टू कम विद अ प्रिपेयर्ड आंसर. ठीक है, these are not related to pharmacovigilance, but why am I helping you? Because irrespective of what that career path is, मेरे लिए आपका सक्सेस होना बहुत जरूरी है. I want to make sure that you're successful in it. Okay, second question. Second question is that what are the stages in clinical trial? So stages in clinical trial, आप सभी को पता है, मैंने पढ़ा है क्लास में कि there are 4 stages, right? So the different stages of clinical trial. And then what is the role of clinical research associate in all of it, right? So that's your second question. Third question, जो लोग अभी CIPT में recently exam देके आए हैं, you know that everybody have been told that what is the ICH GCP guidelines, right? क्योंकि ये जो GCP guidelines है ना, this is what does it mean? Good clinical practice. So you must be able to, अगर आप clinical research associate बन रहे हो, you are helping in the conduction of that clinical trial. You must be very familiar with this guidelines, ICH GCP. तो ये तो पूछेगा ही पूछेगा. आज तक जितने भी इंटरव्यूज हुए, जो भी गया है, सब लोग मुझे वापस आके कहे हैं कि सर ये तो क्वेश्चन दे वर आस्किंग अस, ICH GCP guidelines what it is. ओके, चौथा है you have to very actively work with regulatory bodies, right? So ये एक क्वेश्चन होता है कि क्लिनिकल ट्रायल में या क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट का रेगुलेटरी बॉडीज के साथ क्या काम होता है. What is the role of the regulatory bodies and how does it interlink with clinical research associates, right? So role, this is the fourth question. So here you go, this is the fourth question, this is the third question. Okay, now fifth question, अगर इसका आप जवाब दे पाओगे, what are the common challenges. देखिए common challenges यहां पे लिख देता हूं, common challenges in the clinical trial. अगर ये आप 5 क्वेश्चन प्रिपेयर करके आते हैं, राइट, आपको 75 to 80% इंटरव्यूज का जो फर्स्ट राउंड है वो क्लियर हो जाएगा आराम से, राइट? ऑल यू हैव टू डू इज, क्लिनिकल रिसर्च क्या है, क्लिनिकल ट्रायल में कितने फेजेस है, और क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट का क्या काम होता है उसमें, आईसीएच जीसीपी गाइडलाइंस क्या है, रेगुलेटरी बॉडीज के क्या रोल होते हैं, और वो कैसे क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट उनके साथ कैसे काम करता है डे टू डे बेसिस पे, और कॉमन चैलेंजेस इस इंडस्ट्री में क्या होते हैं. इफ यू प्रिपेयर दिस 5 क्वेश्चंस, at least you can survive the first round. देखिए उसके बाद there is more preparation required, technical round, managerial round, many other things, but at least you know the basics. Somebody will not kick you out of the interview. They'll say okay, let him be there, let's ask more questions to him, right? So this is just a front line set of questions that you can apply for. Fantastic. Anybody has any questions? I am doing this specifically for Oyon Patro, but I can't see Oyon Patro. यही है आप लोगों का प्रॉब्लम
कि आप ही के लिए क्लास करता हूं बट आप ही लोग नहीं आते हो. So this I have already explained to other students. I'm explaining again because Ayan Patra wrote to me in the morning, sir, I am not aware of the questions. Please, can you tell me again? That's why I kind of spent the last 10 minutes explaining all this. ठीक है? अब I'll not explain further. अगर if you have seen it, Ayan Patra, great. If you have not seen it, then you have to go back to this video and rewatch it again. Okay? Good evening to all of you. I will go to the next one, which is QA. तो आज ये सेकंड वाला जो चीज आया था, दिस केम फ्रॉम वसीम, राइट, कि क्वालिटी अश्योरेंस में कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं. उसके कॉलेज में कैंपस प्लेसमेंट है रिलेटेड टू क्यूए इन प्रोडक्शन. सो लेट अस हेल्प हिम आउट. उसको भी पता होना चाहिए कि कौन से क्वेश्चंस आर कॉमन देयर. ओके ओके. सो व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, जब आप कोई दवाई बनाते हैं, राइट, तो आपको एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है, राइट. तो वो जो गाइडलाइन है, अगर क्लिनिकल ट्रायल के लिए वो है जीसीपी, तो व्हाट इज द गाइडलाइन फॉर मेडिकल मेडिकल ड्रग प्रोडक्शन? व्हाट इज द गाइडलाइन? दैट इज जीएमपी. ठीक है. तो एक सेकेंड, एक काम करते हैं, इसे कोई बंद करके लेट्स रीशेप दिस स्लाइड. जस्ट गिव मी 1 second, right? I'm going to be very fast today because it's late in your side also, or I'm also having a little bit of headache, so I don't want to continue this class for very long. But chota, I'll just give you quick examples, and I hope the 11, 12, 13 people who are there in this class, they'll be benefited. बाकी दोस्तों को भी बताइए अगर उनका मिस हो गया for some reason. Tell them that this class is ongoing. Either they join now, or at least they go back and look at it later. ठीक है. और मेरी तौफीक से एक रिक्वेस्ट रहेगा, इफ तौफीक यू आर लिसनिंग, जब आप इसका थंबनेल बनाएं, हाय तौफीक, एट द राइट टाइम पे, जब आप इसका थंबनेल बनाएं इस वीडियो का, तो जरूर डाल दीजिएगा कि इंटरव्यू क्वेश्चंस फॉर क्लिनिकल रिसर्च, क्वालिटी एश्योरेंस एंड मेडिकल. व्हाट इज द थर्ड वन? देयर इज वन मोर दैट वी I also have limited understanding, which is for a health coach, right? So these three we should look at. परफेक्ट. आप सभी लोगों ने क्वेश्चन का आंसर दिया है. इफ यू वांट टू वर्क इन प्रोडक्शन, देन द थिंग्स दैट यू शुड नो इज दैट इंडिया में गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस का एक, देयर इज अ हैंड मैनुअल. यू नीड टू know what are the critical components of GMP. First, what is GMP? And second, what are the critical components in production? Again, in this class, I will not be talking about the answers, right? My job is to teach you pharmacovigilance. This I am doing for you specially so that you at least know what are the common questions. यही सब questions पूछते हैं, फिर भी students answer नहीं कर पाते, right? So at least you know which questions to answer. आप इस question का answer prepare करके लेके आइए, मेरे साथ mock interview कीजिए, मैं आपको बता दूंगा कहाँ पे आपका आंसर अगर better किया जा सकता है, अगर आंसर सही है कि नहीं, कितना बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, how to do storytelling. I'll help you and guide you in that, right? But I'm not going to help and sit and write answers for you, right? वो आपको करना है. कैसे करेंगे आप? आपके लिए भी आसान कर देते हैं. आप थोड़ा गूगल सर्च कीजिए, थोड़ा चैट जीपीटी निकालिए, एंड इन दोनों को मिक्स करके यू मेक योर आंसर, राइट? डोंट कॉपी आंसर्स फ्रॉम गूगल एंड से यही मैं रट्टा मार देता हूं. नोबडी विल लाइक इट. यू नीड टू गिव अ वेरी ऑनेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग, आपकी अंडरस्टैंडिंग. नोबडी वांट्स टू नो कि जीएमपी इज द साइंस एंड आर्ट ऑफ, वो नहीं सुनना है, right? What do you understand by it? Give an example ताकि लोगों को समझ में आए कि what you're talking about, right? So the second one, what are the key responsibilities? अगर आप किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जैसे आपको फार्माकोविजिलेंस में पता है, राइट? ड्रग सेफ्टी, पेशेंट सेफ्टी, ड्रग एफिकेसी, राइट? दोज आर द मेन कंपोनेंट्स. तो क्यूए प्रोफेशनल के लिए what are their key responsibilities? This one you need to know. Responsibilities ढूंढिए, बड़े ही आसान है. दीज आर लाइक बच्चों का क्वेश्चन है, थर्ड ईयर सेकेंड ईयर से ही आपको पता होगा, राइट? सो दीज आर अगेन इजी क्वेश्चन. आई गो टू द थर्ड वन. क्यूसी और क्यूए में क्या डिफरेंस है? दिस इज अ कॉमन क्वेश्चन, हमेशा ही आता है, राइट? और कंफ्यूज करने के लिए कोशिश करते हैं आप किसने लिए अप्लाई किया है, अश्योरेंस के लिए या कंट्रोल के लिए? सो दिस इज द थर्ड क्वेश्चन. यू मस्ट ट्राई एंड आंसर क्यूसी वर्सेस क्यूए. ओके. नाउ क्वालिटी मेंटेन करने के लिए, दवाई की क्वालिटी मेंटेन करने के लिए, व्हाट इज द स्टैंडर्ड और गाइडलाइन दैट गवर्न फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन इन इंडिया? सो आपको पता होना चाहिए क्वालिटी मेंटेनेंस एंड रेलेवेंस विथ रेगुलेटरी बॉडीज.
राइट। ये फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन इन इंडिया, इसका मतलब क्या है? इंडिया में कोई भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन करने के लिए किससे पहले अप्रूवल लेना पड़ता है? राइट। तो क्वालिटी मेंटेनेंस कैसे होता है और रेगुलेटरी बॉडीज के साथ हमको कैसे काम करना होता है, दैट यू मस्ट अंडरस्टैंड। ओके, नंबर 5, हाउ डू यू इंश्योर कंप्लायंस? अगर आपके जीएमपी में लिखा है कि दवाई बनाने के लिए ये करना पड़ेगा, हाउ आर यू इंश्योरिंग कंप्लायंस? कंप्लायंस मतलब रूल के हिसाब से चल रहे हैं। हाउ आर यू डूइंग दैट? কি করে তুমি রুল মেনে, যেরকম ভাবে গুড ম্যানুফ্যাকচারিং প্র্যাকটিসে দেওয়া আছে সেইটাকে মেনে কিভাবে প্রোডাকশন করছো, কি করবে? কিছু তোমার নিশ্চয়ই চেকলিস্ট থাকবে যে এইটা এইটা করছি স্যার, ঠিক আপনারা যেরকম চাইছেন জিএমপি তে সেরকম ভাবে আমরা মেনে চলে ওষুধটার প্রোডাকশন করছি। সেটাকে আমাদের ইংরেজিতে কি বলা হয়? কমপ্লায়েন্স। राइट। सो इफ यू कैन आंसर अगेन दीज 5 क्वेश्चंस, आई एम नॉट सेइंग यू विल गेट द इंटरव्यू, बट जो पहला राउंड होता है, राइट, एचआर कम्स एंड टेक्स अ राउंड, देन अ टेक्निकल इंटरव्यू, पैनलिस्ट टेक्स यू अराउंड, वो लोग यही सवाल पूछेंगे। हाँ, इसके बाद और भी सवाल पूछेंगे जो मोर मैनेजरियल क्वेश्चंस है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, व्हाट इज योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, वेयर डू यू सी योरसेल्फ 5 years फ्रॉम नाउ। ये सारे क्वेश्चंस तो इसके बाद आएंगे ही आएंगे, बट दीज आर मोर फंक्शनल टेक्निकल क्वेश्चंस। तो अगर आपका इनका बेसिक आंसर पता है ना, so this is basically to filter out students. Some students come to the interview without zero preparation. हम तो आ गए भैया, हमने फार्मेसी पढ़ी है, आप हमें ले लो, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं? वी डोंट वांट स्टूडेंट्स लाइक दिस। वी वांट सम स्टूडेंट्स हु आर एटलीस्ट दे आर हैविंग सम बेसिक नॉलेज। सो इफ यू are able to do this, what is GMP, what are the critical components related to production associated with it, what are the responsibilities of a quality assurance person, QC and QA में क्या अंतर है, क्वालिटी मेंटेनेंस रेगुलेटरी बॉडीज के साथ कैसे करते हैं और कैसे कंप्लायंट रहा जा सकता है, दीज आर द 5-6 क्वेश्चंस इफ यू प्रिपेयर फॉर, आपका पहला राउंड ऑफ इंटरव्यू विल गेट क्लियर। चलिए आप लोगों से जल्दी से लेट्स टेक योर क्वेश्चंस। ओके, तौफीक, मोफिनुद्दीन इज सेइंग जीएमपी, चंदन इज सेइंग जीएमपी रिक्वायर्ड फॉर इंडस्ट्रियल पर्पस। 22 मार्च को है सर, बहुत टेंस्ड लग रहा है। अरे टेंशन की बात मत लो, अभी तो बहुत दिन टाइम है, 5 दिन है। आप पहले जाके आज रात ही इस सारे 5 क्वेश्चन जो है, इन 5 क्वेश्चन का आंसर थोड़ा चैट जीपीटी से निकाल लो, कल सुबह बैठ के उसके नोट्स बनाओ, राइट, और फिर आईने के सामने खड़े होके इन सारे 5 आंसर का आंसर देते रहो, राइट। वेडनेसडे को मुझे कांटेक्ट करना, 10 मिनट आपका इंटरव्यू में ले लूंगा। आई विल गिव यू अ फीडबैक कि क्या सही बोल रहे हो, क्या नहीं बोल रहे हो, कौन सा ज्यादा बोलना चाहिए, राइट। तो ये 5-6 क्वेश्चंस आप प्रिपेयर करो, और जो मैंने दूसरे क्वेश्चंस दिए, राइट, जो मैनेजरियल क्वेश्चंस है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, स्ट्रेंथ वीकनेस, 5 years फ्रॉम नाउ, ये वाले आप प्रिपेयर करो साथ में। तो यहाँ के 5 और वो मैनेजरियल वाले 5, 10 क्वेश्चंस का आंसर हो गया, तो इसी के बीच में खेल के आप निकल सकते हो। अच्छा, बाय द वे, जब आप वसीम सीवी बनाओगे तो उस सीवी में फार्माकोविजिलेंस एकदम मत डालना, सीवी प्रिपेयर ही करना ऐसे ताकि वो क्वालिटी अश्योरेंस के लिए ठीक बैठे, राइट। डोंट राइट फार्माकोविजिलेंस एंथुसियास्ट एंड आई कम टू गिव अ क्यूए एग्जाम, राइट, तो फिर नोबडी विल लाइक इट। 23 मार्च को एग्जाम है। शौमिक, you are talking about IASD exam. Wasim is talking about the interview that he has in his college. Vikash is saying something. Yes, manufacturing process, quality control, cleaning and sanitation. QA responsibility, main point is quality, safety, efficacy. Yes, Shomik, heart. Drug and Cosmetic Act, GMP, GLP. এই তো তোমরা তো সবই জানো। এইবার দেখো, आई नो दैट यू गाइज नो, बट इंटरव्यूअर को तो नहीं पता है। इंटरव्यूअर को तभी समझ में आएगा ये बात जब आप उसको एक्सप्लेन करोगे। लॉट ऑफ नॉलेज विदाउट एबल टू एक्सप्रेस इज एक्चुअली जीरो नॉलेज, राइट। कोई तो आपका दिमाग खोल के अंदर झांक के नहीं देखा ना कि आपने फर्स्ट ईयर में अच्छे नंबर लाए हैं, आपने अच्छे से पढ़ाई किया है, आप अपने दोस्तों से बेहतर हो। नोबडी विल ब्रेक योर ब्रेन एंड फाइंड आउट, यू हैव टू टेल इट फ्रॉम योर माउथ। So you need to be more articulative. और देखिए, ये सब फार्माकोविजिलेंस का सिलेबस नहीं है, बट आई एम हेल्पिंग यू। इफ आई एम हेल्पिंग यू, देन यू ऑल्सो नीड टू हेल्प। मेरे यहाँ पे शाम के 5:30 बजे है। आई एम स्पेंडिंग दिस टाइम विथ यू, ऑल्दो दिस इज नॉट फार्माकोविजिलेंस। व्हाई एम आई स्पेंडिंग इट विथ यू? सो दैट यू गेट दैट जॉब। सो यू ऑल्सो हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप जाके ये जो 5 क्वेश्चंस है क्यूए वाले, या 5 क्वेश्चंस जो अभी कुछ देर पहले मैंने दिखाया क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट के, गो प्रिपेयर देम।
Once you're done with the preparation, come back, I'll take your interview. I'm happy to do that for you. Done. फैंटास्टिक. आप लोगों ने सारे नोट्स बना लिए. यू कैन ऑलवेज गो बैक. ये वीडियो आप फिर से चले आइए, फिर से देखिए, क्वेश्चंस कॉपी कर लीजिए. सारे इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस आपको नहीं लिखने हैं. लाइक यहाँ पे देखिए लिखा है व्हाट इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ जीएमपी एंड व्हाई इज इट क्रिटिकल फॉर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन. इतना कुछ नहीं लिखना है. चैट जीपीटी में जाओ, राइट, help me answer these 5 questions. Question number 1, what is GMP? What are its critical components? Question number 2, key responsibilities of QA. Question number 3, difference between QC and QA. Question number 4, what are the guidelines need to be followed for production in India? Question number 5, how to ensure compliance with regulatory bodies while working in प्रोडक्शन. ये 5 क्वेश्चंस आप डाल दो, आपको एक बेसिक आंसर मिल जाएगा. उसको आप अच्छे से प्रिपेयर करो. एंड बाय द वे, और एक चीज आपको बता दो, डोंट बिलीव चैट जीपीटी इज गॉड. इट कैन गिव यू रॉन्ग आंसर्स. 1. नंबर 2, इट विल गिव यू अ वेरी स्टैंडर्ड आंसर. वो अगर मैं सुनूंगा ना आपसे, आई कैन इन 10 seconds टेल यू दैट यू डोंट नो दिस, यू हैव मार्क्ड इट अप फ्रॉम चैट जीपीटी. सो चैट जीपीटी को आप अपना भगवान मत बनाइए. उसको एक बेस बना के चलिए कि हाँ, इससे एक मुझे आंसर मिला. अगर मुझे 10 किताब पढ़ना पड़ता, 10 गूगल सर्च करने पड़ते, इट हैज हेल्प्ड मी स्ट्रीमलाइन. बट अगर आप उसको भगवान मान के वही रट्टा मार के जाओगे, तो देन एवरीबडी विल कैच यू, क्या यू डोंट नो एनीथिंग एक्चुअली, यू जस्ट मक्ड अप. सो व्हाट यू नीड टू डू इज दैट वो आप पढ़ो एंड देन अपने भाषा में बताओ, राइट, अपने हिसाब से बताओ. ठीक है. अगर आपको दिक्कत होती है, आप जाइए, सैटरडे या संडे रुद्रो का इंटरव्यू हुआ था हमारे ही इस चैनल पे. गो बैक एंड सी दैट वीडियो. सैटरडे इवनिंग 10:30 PM वी हैड एन इंटरव्यू विथ रुद्रो. फैंटास्टिक. उसको मैंने ऐसा कोई सवाल नहीं पूछा विच इज जनरल क्वेश्चंस. ऑन द स्पॉट उसको क्वेश्चंस की अलग अलग वैरायटी के, एंड ही यूज्ड हिज ब्रेन्स एंड आंसर्ड द क्वेश्चन. आपको भी वही करना है. अच्छा, ब्रेन यूजेज कैसे होता है? इज ही स्मार्ट? हाँ, he is smart, but that's not the reason he could use his brain fast. What he has the in-depth knowledge of the topic. So अगर उसको मैं टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन करूं तो he is able to answer that. Should be the same thing. ठीक है, 2 मैंने बता दिए. अब it is time to help our friend जो कि प्रिपेयर करना चाहते हैं for a particular type of job. अब इसको थोड़ा हम भी सर्च करते हैं साथ में. देखिए, मैं आप लोगों को एक चीज ऑनेस्टली बताना चाहता हूँ. आई एम नॉट गॉड. आई डोंट हैव एवरी आंसर. आई एम ऑल्सो समटाइम्स रॉन्ग, राइट. आई एम अ ह्यूमन बीइंग. आई ऑल्सो मेक मिस्टेक्स. सो आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट थिंग्स while teaching you. एक दो चीजों के बारे में आई हैव गुड नॉलेज, बट डज नॉट मीन दैट आई हैव नॉलेज अबाउट एवरीथिंग. बट व्हाट आई कैन डू बिकॉज ऑफ माई एक्सपीरियंस, मैं जल्दी से सर्च करके आपको बता सकता हूँ सही रास्ता कौन सा है, राइट. सचिन तेंदुलकर ऐसा हो सकता है कि वो टेनिस नहीं खेलता, बट बेसिक ऑफ फिटनेस, बेसिक ऑफ स्पोर्ट्स वो भी बता सकता है. इवन इफ यू आर टॉकिंग टू हिम अबाउट टेनिस, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, ही कैन टेल यू कि ठीक है आपको फिट. मैं बास्केटबॉल कैसे खेलते हैं वो नहीं बता सकता हूँ, बट बास्केटबॉल के लिए जो फिटनेस चाहिए, जो दौड़ना पड़ता है, वॉलीबॉल के लिए जो फिटनेस चाहिए, जैसे आपको मसल बिल्ड करनी है, वो हमारे क्रिकेट में भी कॉमन है. सो आई कैन टेल यू व्हाट आर द कॉमन थिंग्स एंड देन यू कैन अप्लाई इट. Yes, Shomik has said the right thing. Fantastic, Shomik. Chat GPT can reduce your time, but don't think that it is the Bible. If you think it's Bible, you'll make a mistake. Chaliye. Okay, I am just looking at Amura. Amura is a brand which is probably offering a job for a junior health coach. So let me just see. All right. So let's just find this out. मैं भी थोड़ा यहाँ पे गूगल यूज कर रहा हूँ बिकॉज आई डोंट हैव लाइक ऑन द स्पॉट आंसर्स. किसके आंसर्स क्या होंगे? Got it. All right. So Priya,
I will try and guide you on this, but again I'm saying that I'm not an expert in this field, तो मैं 100% सही बता रहा हूँ कि नहीं, but मैं आपको जितना गाइडेंस दूंगा वो आई एम श्योर इट विल बी यूजफुल फॉर यू, राइट? तो पहली चीज बात करते हैं आपकी जॉब की. सो प्रिया हैज टॉक टू मी अबाउट अ जॉब विच इज इन अ कंपनी कॉल्ड एज अमूरा, राइट? This is a company which wants a person who is a junior health coach, right? Or salary is somewhere around 3.5 lakhs, 3.5 4 lakhs, right? Rotational shift है, थोड़ी flexibility है. The location is in Chennai. There'll be some sets of online interviews for this. ठीक है? तो दिस इज द कॉन्टेक्स्ट. अब इसके कॉन्टेक्स्ट में बताता हूँ हेल्थ कोच का क्या काम है. हेल्थ कोच क्या करता है कि लेट्स से आई हैव बिकम fairly, not very healthy right now, right? So I want to reduce my weight, or I have gained a lot of cholesterol, I want to reduce. So I don't want to do it through some just by exercise. I want a holistic guidance कि क्या मुझे करना चाहिए. What should be my diet, what should be my exercise patterns, what should I eat more, how much should I sleep, how much water should I drink. एक holistic knowledge चाहिए. सो नाउ मे बी मैं अपने फील्ड में बड़ा एक्सपर्ट हूँ, मेरी 1.5-2 करोड़ तनख्वाह है, बट एट द एंड ऑफ द डे मुझे मेरा हेल्थ एंड फिटनेस भी तो मेंटेन करना है. मैं दिन भर ऑफिस में काम करता हूँ 10-12 घंटे, तो मेरे पास टाइम नहीं होते हैं टू काइंड ऑफ गेट द राइट गाइडेंस एंड एडवाइस. व्हाट शुड आई डू? व्हाट शुड आई डू? आई शुड टेक द हेल्प ऑफ अ हेल्थ कोच. हेल्थ कोच के 3 मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं. एक, वन इज क्लाइंट हैंडलिंग. You should be someone who is good to speak to, who can control a discussion. You should come across as knowledgeable. So first ability is client handling. Second ability is to be an expert in areas like nutrition, right? कि क्या आपको खाने के लिए होना चाहिए, what should be your diet like, what should be your exercise patterns like, what should be your sleep quality like, right? So these are the areas that you should be well versed with. ठीक है? बट अब आप मुझे पूछेंगे सर ये तो हो गया, मुझे जॉब रोल समझ में आ गया, बट व्हाट इज इट दैट दे विल आस्क मी इन द इंटरव्यूज. सो इंटरव्यू के लिए आई एम गोइंग टू गिव यू 5 or 6 क्वेश्चंस, राइट? बट आप प्लीज इस पे और रिसर्च कीजिए, बिकॉज जनरली what they are looking for is a smart candidate, right? Not necessarily a knowledgeable candidate, because these kind of health coach jobs is generally with people with a very high salary who do not have time. They want fitness in their life, they want to improve their lifestyle, they want a health coach. Health coach is somebody जो कि आपको डे टू डे बेसिस पे या वीकली बेसिस पे आपको बताए कि how you should kind of live your life. ठीक है? So I'm going to put some questions here. Again, take it with a pinch of salt. Not sure if all of these is going to be useful, but at least this could be your base for talking. चलिए आपके लिए थोड़ा क्वेश्चन यहाँ पे ऐड कर देते हैं. हेल्थ कोच इंटरव्यू क्वेश्चंस. हमको करना है शेयर. And then we go to the next one. And there you go. All right. So let's look at some of the questions that will be asked. So first question is around nutrition and how would you incorporate them into your health coaching, right? So that's going to be key. अब आप पूछेंगे आप तो फार्मासिस्ट है, आप तो न्यूट्रिशन में तो बीएससी ऑनर्स नहीं है, so how will you understand? So link it with some of the chapters that you have studied. आपके third year or fourth year में there would be some topics which is related to health and fitness, right? So link it with that and say that I'm interested in this area. कहीं पे भी आप जाओ, कल आप अगर नासा में भी चले गए इंटरव्यू के लिए, तो आप नहीं बोल सकते कि आई एम अ स्टूडेंट ऑफ फार्मेसी एंड आई वांट टू जॉइन नासा. नहीं, आपको इंटरलिंक करनी पड़ेगी आपकी जिंदगी की स्टोरी ये कह के कि फार्मेसी में मेरे को ऐसा कुछ मैंने पढ़ा है which is related to space that interested me, that's why I'm here for NASA and I'm really excited to get this job. ठीक है? अगर मैंने नासा में जाके बोला कि आई एम एन एंथुसियास्ट इन फार्माकोविजिलेंस, तो वो मुझे क्यों लेंगे? You have to build your story based upon the interview that you give. तो आपके थर्ड एंड फोर्थ ईयर में you would have read something related to health, human health, right? So and fitness, something of that sort which would be related to nutrition, to diet. These are the things that you can follow and say that how can I incorporate this in my B.Pharm topics, right? Okay. Next is that I can say that how is emotional and
मेंटल वेलबींग एसोसिएटेड विथ फिजिकल हेल्थ, राइट? हम लोग फार्मेसी में क्या पढ़ते हैं? We talk about medicines. Those medicines, what they do, they take care of our physical health. But the physical health is only one part of the aspect. The other is mental health and emotional health. So what you need to do, again, going back to your chapters in your interviews or in your colleges, you would have had something which is related to health other than physical fitness. वो वाला concept आप लेके आइए. So there is no specific questions as such that people will ask you. They will try and see that कि आपने B.Pharm में जो पढ़ा है, how is interlinked with these kind of things. Okay. Third, what are the common challenges faced in as a health coach? What is your common challenges? Right? Again, I don't have an answer for these questions. आपको थोड़ा चैट जीपीटी करना पड़ेगा, उनका जॉब समझना पड़ेगा, एंड देन यू हैव टू इंटरलिंक इट विथ योर कोर्स, saying कि देखिए, when I have studied 4 years of pharmacy, right, I have often come across people who are healthy on their face, but they're emotionally depressed. Now, how do you kind of improve their situation? That is where a junior health coach's job comes in. I just don't see myself as a B.Pharm graduate who is interested in medicines. I am looking at more at life from overall wellness. So I want to combine these three areas: physical health, mental health, and emotional health. In my third year of college, I have studied so and so books, which motivated me to understand more, not only about medication, but also overall well being. That's why I am keen to apply for this job. अगर आप ऐसे करके बोलेंगे, then you have a better chance than other people. Right? I don't know कितना मेरा guidance is helpful or not helpful, क्योंकि honestly, as I said to you many times, मुझे इसके बारे में इतना ज़्यादा पता नहीं है, but I can definitely tell you that questions will be around this. This is the job that they are looking for you to do. And if you can add certain things, then that will be good for you. All right, great. I hope वो तो मुझे वक्त ही बताएगा कि अगर मेरे क्वेश्चंस वाज हेल्पफुल. प्रिया, प्लीज कीप कनेक्शन विथ मी, लेट मी नो आपका इंटरव्यू कैसे होता है. मैं भी इसके ऊपर थोड़ा और रिसर्च करूंगा, शायद आपको बेटर गाइडेंस दे पाऊं. सो मे बी आई जस्ट सी थ्रू माय कॉन्टैक्ट्स, इफ एनीबॉडी इज अ हेल्थ कोच, आई ट्राई एंड पुट यू इन कॉन्टैक्ट, और एटलीस्ट आई गेट द क्वेश्चंस फ्रॉम देम एंड पास ऑन डाउन टू यू. ठीक है? मैं हमेशा ये कहता हूं कि आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन एवरीथिंग. दुनिया में तो कितने सारे चीजें हैं. देयर माइट बी 1 million थिंग्स एसोसिएटेड विद लाइफ साइंस एंड हेल्थ केयर. I don't know all of them, but at least I can try you based upon my experience. I can at least share some insights. Maybe they'll be useful, maybe they'll not be useful, but at least I can make an attempt to help you. Okay, 8th sem, there is one subject named as social and preventive pharmacy, discussed about health concept. देखिए, that's it. That's the thing. अगर प्रिया आपने भी कहीं पे पढ़ा है ऐसे topics 3rd year 4th year में, right? Bring them. Story आपको बनानी है. They are not looking for right or wrong answer. They are looking for a candidate who can do the job for them. और इस जॉब में आप देखिए, अगर फार्मेसी का कंपोनेंट इज ओनली 30%, द अदर 60% इज मेड अप ऑफ इमोशनल वेलबींग एंड मेंटल वेलबींग. सो यू हैव टू ब्रिंग इन दोस कॉन्सेप्ट्स. अगर ये सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी वगैरह से इफ यू कैन कैच सम कॉन्सेप्ट्स एंड टॉक अबाउट, देन दैट विल बी गुड. और एक काम आप ये भी कर सकते हैं प्रिया, अगर थर्सडे को जब मैं वसीम का इंटरव्यू लूंगा, आप भी थोड़ा प्रिपरेशन करके आइए, जितना आपको लगे. राइट? ऐसा भी आप कर सकते हैं कि sometimes I'm busy and I can't come on a class. आप ऐसा कर सकते हैं कि मुझे ऑडियो मैसेज भेज दीजिए कि सर, दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज माय आंसर, व्हाट डू यू थिंक. ठीक है? तो मैं आपको ऑडियो मैसेज वापस सुन के आई कैन देन शेयर इट बैक टू यू. मेरा फीडबैक जो भी है, आई कैन शेयर इट. नहीं, कोशिश करता हूँ. आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन एवरीथिंग, बट इट्स गुड. देखिए, अगर मान लीजिए कल प्रिया को ये जॉब मिल गई, तो फिर क्या, दिस इज ऑल्सो एन एरिया आई कैन टॉक मोर विद स्टूडेंट्स. राइट? सो आई ऑलवेज टेल यू दैट यू आर माई एसेट्स. 5 साल बाद, 10 साल बाद जब आप इंडस्ट्री एक्सपर्ट बन जाओगे, ऑल आई नीड टू डू इज कॉल प्रिया एंड से कि प्रिया, आपके सेक्टर में क्या चलता है, कौन से क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं, क्या आपको डे टू डे लाइफ में करना पड़ता है. सो आई कैन pull those information out, और जो नए students होंगे, we can help them. Right, so we've explained 3 areas. The last thing I want to do today is to look at case processing. So Chandan, if you have sent me, I don't want this class to be very long. अगले 10-15 मिनट में इसको खत्म करते हैं. I want to see two areas. One is Shomik. Shomik बेचारा 2-3 दिन से ये बना के बैठा है and not able to help him. I feel very guilty कि I'm not doing justice to him.
Okay, so I've got Shomik's page open. I have an interview on 19. ठीक है, ठीक है, अभी आपने मेरे क्वेश्चंस तो नोट कर लिए प्रिया. आप एक काम कीजिए, कल सुबह इसके क्वेश्चंस लिखिए, चैट जीपीटी में डालिए, आंसर्स निकालिए, थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए. प्रैक्टिस आप ऐसा कीजिए, मुझे ऑडियो भेज के कीजिए प्रैक्टिस. When I get time tomorrow, although I have to go to client office whole day, I'll not be there. I'll be coming back around this time tomorrow, but at least I can listen to it on the headphone, and then whatever advice I can give you, I can share it with you. अच्छा, प्रिया इज ऑल्सो सेइंग 8 सेम में हम वी हैव दैट. तो बस इसी को देखिए, कहानी आपको बुननी है. मैंने आपको वो डॉन वाला बताया था कि बंदूक के अंदर गोली है कि नहीं सिर्फ डॉन को पता है, बाकी दुनिया को तो नहीं पता है. आप जैसा बोलेंगे वैसा लोग मानेंगे, जितना आप उसको रियल बनाएंगे उतना रियल लगता रहेगा. सो प्रिया, इफ यू कैन टेक दैट सब्जेक्ट and then define it properly, that this is why I want to be health coach, this is what I think a health coach does. Bas, job is yours. Right, let's go to the next one, which is Shomik's. Shomik, I hope you're there. चलिए आपके केस प्रोसेसिंग वाले स्टार्ट करते हैं. All right, so he's given a patient ID, therapeutic date is after end date, that's fine. A 35-year-old female developed nausea after taking metformin 2 tablets daily. The patient also took ibuprofen during this period. Action taken is unknown. इसमें ibuprofen is a concomitant drug, right? You should have mentioned concomitant as a word. वो मुझे दिखा नहीं यहाँ पे शौमिक. So for me, this case narrative is not so good. Gastrointestinal disorder, nausea, vomiting, nausea. This is fine. शौमिक, इसमें आपको और एक चीज करना था. That is, आपको किस चीज पे फॉलो अप करना है, क्या क्या पूछना है. Going back to the healthcare professional, वो आपको ऐड करना था. I'm not going to cut your marks for this. It's a good work. But अगर वो आप डालते तो फिर ये होलिस्टिक होता. देखिए, एज अ फार्माकोविजिलेंस एसोसिएट, इट इज नॉट ओनली आवर जॉब टू डू केस प्रोसेसिंग, बट ऑल्सो टू आइडेंटिफाई एरर्स एंड देन फॉलो अप ऑन इट. कि इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, क्या हमें लॉजिकल क्वेश्चंस पूछने चाहिए. इट इज वन थिंग टू से सर डेटा गलत है. इट इज अदर थिंग टू से कि सर डेटा गलत है, मुझे लगता है इस तरीके से इसे सही करना चाहिए. लेट मी राइट यू एन ईमेल एंड टेल यू व्हाट शुड बी करेक्टेड. डन. ऑलराइट, लेट्स लुक एट द नेक्स्ट वन. 27-year-old male experienced severe headache after taking paracetamol 1 tablet 3 times a day. Symptoms subsided after discontinuation. देखिए, ये जो आपने वर्ड लिखा है कल ही हमने पढ़ाया है, डी चैलेंज री चैलेंज. What does this mean? Symptoms subsided after discontinuation, which means it's a positive D challenge. You should have written the word positive D challenge there, है ना. आप सोचिए, ये आपको किसको भेजना है? Whom do you need to send this to? You need to send this to a regulatory body. So regulatory body already understands these kind of words. आपको भी then you have to use these kind of words. Okay, so I think this is your second thing. Shomik, I hope you're there. बता तो रहा हूं, but जो जिसके लिए कर रहा हूं वही शायद है नहीं. Shomik, if you're there, just say hi on the chat. वेट करते हैं शौमिक के लिए. तब तक लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड वन. Data entry error. A 40-year-old male reported chest pain after taking aspirin. He has a history of hypertension. Immediate medical attention was required. देखिए यहाँ पे आप दूसरा चीज देखिए, he had a history of hypertension. तो इसके लिए was he taking a atorvastatin या दूसरा कोई मेडिसिन, वो आपने मिस कर दिया. अगर लिखा नहीं है तो वो भी आपको बताना पड़ेगा. अगर लिखा है तो आपको concomitant medication में वो चीज डालनी होगी. That is missing here. एक बार ये भी देख लेते हैं हम केस नैरेटिव कैसे लिखते हैं. लेट्स लुक एट दैट. अच्छा, शौमिक इज देयर. ओके सर, आई करेक्ट इमीडिएटली, नो प्रॉब्लम, थैंक यू. एक बार देख लेते हैं अच्छा केस नैरेटिव कैसे लिखा जाता है, राइट. सो लेट्स गो बैक. केस नैरेटिव, राइट. तो आपको किन चीजों के बारे में लिखना है, किसको याद है? आपको पेशेंट इंफॉर्मेशन लिखना है, पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री लिखनी है. आपने लिखी है, दैट्स गुड. आपने एज लिखा है, जेंडर लिखा है, सो दैट इज वन थिंग यू हैव डन राइट. नेक्स्ट थिंग आपको क्या करना है, एडवर्स इवेंट डिस्क्रिप्शन, नेचर, वो तो आपने
ज्यादा नहीं लिखा, ऑनसेट कब हुआ था उसके बारे में नहीं लिखा, ड्यूरेशन कितने दिन से प्रॉब्लम था उसके बारे में आपने नहीं लिखा। अब आप कहोगे कि सर उसमें इंफॉर्मेशन ही नहीं था, मैं कैसे लिखूं? बट ये सारी चीजें फिर आपको लिखनी पड़ती और एक कॉलम बना के, दीज आर मिसिंग इन्फॉर्मेशन, आई नीड टू डू अ फॉलो अप फॉर देम। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट क्या लिखा है, डोजेज, डोजेज आपने लिखी हुई है, फैंटास्टिक। एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन आपने नहीं लिखा, मे बी बिकॉज इट वाज नॉट देयर इन द डेटा पॉइंट, बट देन यू नीड टू देन से कि कैसे इंट्रावेनसली एडमिनिस्टर किया था या कैसे भी। थेरेपी का ड्यूरेशन कितना दिन था वो आपने शायद, अगेन इट मे नॉट बी इन द डेटा, दैट्स व्हाई यू हैवंट पुट इन, राइट। कॉन्कोमिटेंट मेडिकेशन, इसके बारे में मैंने आपसे बात की। रिपोर्टर के बारे में वो आपने कहीं पे भी नहीं लिखा कि किसने ये आपको दिया है, right? This, I know that reporter details is present in the sheet, you have missed this one. Perfect, perfect, good Shomik. चलिए दो चार और देखते हैं। ओके, डुप्लीकेट एंट्री, वेरी नाइस। डुप्लीकेट एंट्री क्या कह रहे हैं, 22-year-old फीमेल डेवलप्ड इचिंग एंड रेडिशनेस आफ्टर टेकिंग एमॉक्सिसिलिन। बट कब लिया था, मतलब कितने दिन बाद, एमॉक्सिसिलिन लेने के 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 10 दिन बाद, वो मिसिंग है। शी हैड अ प्रायर हिस्ट्री ऑफ एलर्जीज, शी हैड अ प्रायर हिस्ट्री ऑफ एलर्जी। ओके, उसके बाद क्या किया, क्या हुआ, बंद कर दिया उसको, डी चैलेंज हुआ, री चैलेंज हुआ, बाकी की कहानी ही नहीं है। सो फॉर मी दिस वन इज नॉट करेक्ट, राइट। ये सब ठीक है, this is fine, thank you, but case narrative should be like the one which I showed you. Slide number, slide कौन सा है ये, हाँ ये slide number 60 है। आप जाइए, हमारा जो नोट्स है वो पढ़िए, उसके अंदर स्लाइड्स पे ये सब दिया होगा, ठीक है। तो शौमिक, मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, बिफोर आई रीड, आई कैन गो ऑन रीडिंग ऑल ऑफ देम, बट हर एक में ना मैं, मुझे यही दिक्कत लगता है नजर आएगा, राइट। सो आप और एक कॉलम ऐड कीजिए, इस केस नैरेटिव को और बेहतर बनाइए। Go through that slide number 60, look at all the points, whatever you can bring here, bring it, whatever you cannot bring, put it in the follow up column, ठीक है। वैसे आपने चीज बहुत बढ़िया बनाया है, आई विल गिव यू अ 7 out of 10 राइट नाउ, 7 out of 10, बट वी कैन मेक इट 10 out of 10 ऑल्सो। अगर आप फॉलो अप का कॉलम डाल दे, अगर आप केस नैरेटिव इंप्रूव कर ले, आई एम हैप्पी टू गिव यू 10 out of 10, राइट, बट यू हैव टू पुट द एफर्ट। आपने बहुत सारे, कितने किए हैं, वाह, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी गुड। चलिए आप ये शीट के जो 1 2 3 4 5 5 और भर लीजिए, नया कॉलम लगाइए और केस नैरेटिव को थोड़ा इंप्रूव कीजिए, आई विल बी वेरी हैप्पी विद दैट। अच्छा, एक चीज आपको ये भी पूछना चाहूंगा, आई होप यू हैव नॉट टेकन हेल्प ऑफ एनी चैट जीपीटी एंड अदर थिंग्स, खुद से मेड्रा कोडिंग किया है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। ओके, डन। व्हाट्स द अदर थिंग, और किसका केस प्रोसेसिंग देखना बाकी था, वाज इट चंदन? चंदन, आपने केस प्रोसेसिंग मुझे थोड़ा ईमेल कर दीजिए, मैं देख लेता हूं। चंदन हैज सेंट मी केस प्रोसेसिंग ऑन व्हाट्सएप। चंदन, आप सभी लोगों से मेरी ये गुजारिश है, जब भी आप भेजे तो इस पे मत भेजिएगा, मेल पे मत भेजिएगा, हमेशा व्हाट्सएप पे मत भेजिएगा, मेल पे भेजिएगा। कैन यू सी माई स्क्रीन? गुड। 5 minutes quickly let's spend on Chandans, please. Others, I know it's late in the night, but देखिए दूसरों का भी देखना पड़ता है, otherwise you can only learn from others, right? This is fine. 70-year-old female patient is reported to take in concomitant drug paracetamol, and after taking ibuprofen, dizziness 3 times a day, developed shortness of breath and showed disability. नो चेंजेस इन थेरेपी। यार आपकी सब कुछ सही है, बट द क्वालिटी ऑफ इंग्लिश रिटन इनसाइड इज नॉट गुड, ठीक है। आप फिर से मेरे स्लाइड्स पे जाइए, स्लाइड नंबर 61, 62, 63, जहां पे मैंने ना एग्जांपल दी है कि कैसे आपको लिखना है। आपने सब कुछ सही लिखा है, बट उसकी जो इंग्लिश है, क्वालिटी ऑफ इंग्लिश इज वेरी प्योर। ये कोई पढ़ेगा तो लगेगा कोई बच्चे ने लिखा है, कोई ग्रेजुएट ने नया नया कंपनी ज्वाइन किया, ऐसा ऐसा लिखा है। थोड़ा मैच्योरिटी इस पे लाना पड़ेगा, थोड़ा इंप्रूव्ड पॉलिश्ड वर्जन ऑफ इंग्लिश लिखना पड़ेगा, ठीक है। गो बैक टू दो स्लाइड्स, यू हैव ऑल दैट इंफॉर्मेशन देयर। लेट्स लुक एट द नेक्स्ट वन। Difficulty in breathing. Okay. Suspect drug name, therapeutic data is missing, follow-up is required. Very good. This is good work.
This is good work. 42-year-old patient is reported to take in amoxicillin and after taking suspect drug for shortness of breath one 4 tablets 1 time a day developed dizziness. Okay, this is good. No changes in therapy cause death to the patient. हम्म, ये आपने बिल्कुल सही लिखा है, बट मैं बस सोच रहा हूँ ये अगर रियल लाइफ में कभी होता तो दिन तो बहुत लोगों की जेल हो जाती. आप 4 टैबलेट्स एक इंसान को दिन में देते जा रहे हो कंटिन्यू डोजेज में इन स्पाइट ऑफ सीइंग दैट दे आर हैविंग शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, और फिर आपने डोजेज चेंज नहीं किया तो वो फाइनली मर ही गया. No. This should have been reported earlier, dosage should have been changed, and the life could have been saved. Anyways, this is just a dummy case, तो ऐसे दिख रहा होगा, but yeah, it is what it is. Let's go to the next one. 39-year-old patient, other is reported to take in concomitant drug metformin and after taking ये एक आपने यहाँ पे गलती कर दी. आपको उसकी मेडिकल हिस्ट्री भी बतानी है, कॉन्कोमिटेंट ड्रग भी बतानी है, बट कॉन्कोमिटेंट ड्रग से पहले आपको बतानी है कि सस्पेक्ट ड्रग कौन सा है. Is it because of metformin or is it because of amoxicillin? Amoxicillin is first, right? So you have to give a little bit of details on that first and then say that concomitant drug metformin भी उसके साथ में चल रहा था. No changes in therapy. Okay. A 20-year-old adult male patient is reported to taking concomitant drug paracetamol and hospitalization after taking it for rash. 2 tablets for 2 times per day, developed nausea, D challenge is performed. Fantastic. Fantastic. This is what I wanted to see. Right. Again, इसमें क्या मिसिंग है? क्वालिटी ऑफ इंग्लिश इज वेरी पुअर. राइट, तो आपको थोड़ा नुआंस्ड इंग्लिश लिखना है. ये अगर आपको याद हो चंदन, हमने जब क्लास कराया था तब आपने देखा होगा कि हमने 5 या 6 एग्जाम्पल लिए थे. राइट, आई हैड गिवन यू द एग्जाम्पल एंड देन यू डिड इट, एंड वंस यू डिड इट आई शोड यू द फाइनल आंसर. तो आप में से बहुत लोग सही आंसर दे रहे हो, बट देन दैट आंसर हैज टू बी क्राफ्टेड विद अ बेटर इंग्लिश. Sir, I have a question regarding case narrative. Should we mention concomitant drug before the suspect drug? No, that's what I said, right? आप पहले amoxicillin के बारे में लिखिए, उसके बाद concomitant. पहले suspect, फिर concomitant. See, concomitant is an additional information, right? कि ये भी साथ में चल रहा था. But what is your suspect drug? उसको पहले लिखना है. Actually, sir, I have the same issues like RSR. चलिए एक दो और ले लेते हैं. 47-year-old patient is reported to taking concomitant drug. सारे में एक ही गलती है. First of all, the English is not up to the mark. Second, आपने वो जो concomitant suspect का जो है, suspect पहले, concomitant बाद में, right? This is good. This is good work. यही मैं चाहता हूं. This is something, Shomik, you see this need to be done. 75-year-old patient is reported to taking concomitant drug amoxicillin and after taking ibuprofen for headache 1 tablet. तो कौन सा यहाँ पे concomitant drug है? Amoxicillin. Okay, और ibuprofen suspect drug है. अच्छा, इसमें ये आपने नहीं मेंशन किया कि कितना दिन इसका डोजेज चल रहा था, कितने दिन बाद इसको रिपोर्ट किया गया था. If you look at that slide, right, it says what is the duration, what is the onset period. वो सारी चीजें यहाँ पे मिसिंग है. थोड़ा और इसको डेप्थ देना पड़ेगा. 5 दिन से ले रहे थे, उसके बाद डी चैलेंज हुआ, 4 दिन से ले रहे थे, फिर उसको स्टैंडर्ड थेरेपी दिया गया. ये सारी चीजें मिसिंग है. ये आई एम लुकिंग एट द साइड ऑल्सो. ओके, इट्स नॉट दैट आई एम नॉट लुकिंग एट द साइड. ये भी मैं देख रहा हूँ. It's all correct. A 32-year-old male patient is reported to take in concomitant drug paracetamol and after taking suspected for nausea, 3 tablets for 1 time a day. All of them same problem. So I can read all of them, but yeah, the problem is the same. And yeah, but एक चीज I will give all of you credit. आपने इतनी मेहनत से इसको बनाई है. This will not go for waste. This is very important and it will always help you in life, right? So very good work. I'll just quickly give you the marks that I want to give. Let me open up the sheet.
Okay, where do we have Chandan? Chandan, I'll give you an 8, right? It was very nicely done. बट अगर आपके लिए कुछ मिसिंग है तो वो आप थोड़ा चेंज कीजिए, सस्पेक्ट वर्सेस कॉन्कोमिटेंट, थोड़ा डेप्थ ऐड कीजिए डिटेल्स में. फॉलो अप आपने बहुत बढ़िया किया है, दैट वाज फैंटास्टिक, इट वाज गुड टू सी. और इंग्लिश आपको थोड़ी सुधारनी पड़ेगी, सो दैट्स व्हाई आई एम गिविंग यू 8 out of 10. बट you can improve, you can also get 9.5 at least. If you can just replace this, revise this and bring it back to me next Saturday, I'm happy to give you a higher score for it. ठीक है, so इस पे थोड़ा आप मेहनत कीजिए, but you're on the right track, so that's the most important thing. And then we've got Shomik at 7. Shomik कहाँ है आप? Shomik, आपने अभी तक प्रेजेंटेशन नहीं दिया है. सैटरडे कुछ कोशिश कीजिए प्रेजेंटेशन देने के लिए. Don't delay it any further. And then who else did we see today? Who else did we see? Did we see Shomik and Chandan only? चलिए ठीक है, जिन्होंने भी दिखाया है, I think all of them have done well. Good scores. आप देख ही सकते हैं राइट हैंड साइड में who is leading right now, 43.5, Rudro. But इसका है because he's already given the mocks. Other people, if you do the software and mocks, you might be do even better than Rudro. अभी इस लिस्ट में मैं देख सकता हूँ एक बंदे को तो सर्टिफिकेट मिलना ही मिलना है, which is Rudro, because he's already scored 43.5. Pass marks is 40, so he's already got the certificate, right? Now Rudro, you need to fight for the recommendation note. Yes, so what I will suggest is that first go and read my slides. ठीक है, I can explain you again, but आपको भी थोड़ी मेहनत करनी है. Go to my study material, go to slide number 60, उसके आसपास ही रहेगा, वहां पे जाइए, एक दो केस नैरेटिव पढ़िए, उसके बाद आप केस नैरेटिव खुद से कीजिए, राइट? एक पन्ने पे आपको एग्जाम्पल दिखेगा और अगले पन्ने पे आपको आंसर दिखेगा, तो आप खुद पहले एग्जाम्पल को आंसर में कन्वर्ट कीजिए और उसके साथ मैच करके देखिए कहां पे आपका गैप रहा, तो वो सारी चेंजेस पहले आप कीजिए, उसके बाद आई कैन ऑलवेज डू वन फॉर यू, राइट? सो एफर्ट हैज टू कम फ्रॉम यू फर्स्ट, देन आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू. Low marks in participation. Low marks in participation for Rudro. Rudro. ठीक है, अभी भी एक दो क्लासेस है ना, तो इट विल इम्प्रूव. सी फॉर 1-2 marks लाइफ विल नॉट चेंज, राइट? 1-2 marks विल नॉट मेक अ डिफरेंस. रुद्रो, अभी आपको फाइनल एग्जाम देने हैं, उसके लिए आप फोकस कीजिए कि जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस आएंगे उसको कैसे निकालेंगे आप, राइट? अगर ऐसा हुआ कि आपको एक नंबर की वजह से टॉप 5 में नहीं आ पाए, आई विल टेक केयर ऑफ थिंग्स, डोंट वरी, राइट? बट आप मेहनत कीजिए. आई वांट टू सी कि अगर उसमें 100 मार्क्स का एग्जाम होगा संडे को, देन आई एम लुकिंग एट यू गेटिंग 95, 97, 98 मार्क्स इन इट, राइट? चंदन, आपके पास भी शीट है, खोलिए उसको एंड देन आप देख लीजिए कितना है आपका क्लास पार्टिसिपेशन स्कोर. मुझसे क्यों ये स्लेवरी कराते हैं आप लोग? व्हाट इज माय स्कोर सर? आपके पास लिंक है, जाइए देख लीजिए. बाय द वे योर स्कोर इज 9. गुड, चलिए, दैट्स ऑल. आई कितने, हाउ वी हैव स्पेंट 53 minutes. That's all I wanted to talk about. 3 different jobs, 3 different interview questions I've provided to you. I've checked your case, class participation and all that stuff, the case narrative stuff. So I think you all are in good place. अभी आपको बस 7 दिन मेहनत करनी है, नॉन स्टॉप प्रिपरेशन. मेरे स्लाइड्स पढ़िए, राइट? मेरे पास ना यूट्यूब में फीड आता है, कौन मेरा वीडियो देख रहा है वापस, कौन नहीं देख रहा है. आई नो ऑल द डिटेल्स, राइट? सो आई नो दैट यू आर नॉट looking at my videos because they are long, but दुनिया में मेहनत जो करते हैं उन्हीं को फल मिलता है. So go back, look at my videos, look at the examples, prepare accordingly. Yes, all questions will be, so there will be 50 questions of 2 marks each. All of them will be MCQ. सही आंसर हुआ तो नंबर आएंगे, नहीं आंसर हुआ तो there are no negative marking. That's very kind of you to say, Rudro. Thank you so much. I'm trying my best.
देखिए मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको फार्माकोविजिलेंस ही करे, क्लिनिकल रिसर्च मिले ले लो, मेडिकल राइटिंग मिले ले लो, इंडस्ट्री में जाओ, कुछ दिन काम करो, उसके बाद खुद ना खुद आपको पाथ मिल जाएगा, राइट? क्या मैं आज की डेट में पीवी करता हूं? नहीं करता हूं, बट क्या मैं सक्सेसफुल नहीं हूं? सो व्हाट माय करियर विल टेक मी, वेयर आई विल गो, नोबडी नोज, सिर्फ भगवान को पता है। हमको बस अपना करते जाना है, राइट? वी हैव टू कीप वॉकिंग ऑन अ पाथ एंड वी विल फिगर आउट ऑन आवर ओन। जब सचिन तेंदुलकर जब क्रिकेट एकेडमी में गए थे, ही वांटेड टू बिकम अ बॉलर, बने वो क्या? बैट्समैन, राइट? ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है कि हम सोचते हैं हमें ये करना चाहिए, बट जब हम उस फील्ड में जाते हैं तो हमको समझ में आता है कि नो, द अदर थिंग इज एक्चुअली बेटर फॉर मी। सो व्हाट इज बेटर फॉर यू, यू विल फिगर आउट ऑन योर ओन। बट अगर सचिन तेंदुलकर कभी क्रिकेट एकेडमी में जाते ही नहीं, घर बैठ के ये सोचते कि यार बॉलर तो इतने इंडिया में कम है, मुझे चांस नहीं मिलेगा, देयर आर 1 मिलियन पीपल हु डू बॉलिंग, हाउ कैन आई कम इन टॉप 3 इन इंडिया, तो वो तो कभी एस्पायर ही नहीं करते। फर्स्ट यू हैव टू टेक द स्टेप, रेस्ट विल फॉलो। Fantastic. Okay, I am having terrible headache, so I will go back and sleep. Right? You guys work hard. मैं देखता हूँ बहुत लोग मेरे WhatsApp में स्टेटस देखते हैं रात के 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे। तो कल ही when I was in airport, I was thinking it's 3:30 at night. People are still looking at my WhatsApp status. तो अगर if you're looking at my WhatsApp status, I will take your class also at 3:30 at night. मतलब आप जाग रहे हो तो मेरा क्लास कर ही सकते हो। There is a big pressure on freshers, 12 to 13 hours of duty, also working on weekend. What's your view? It's okay. मेहनत तो आपको करनी है ना। देखो, आपको कौन सा कोई जायदाद देने वाला है बिना काम करे? कोई नहीं। जो भी जिंदगी में आएगा वो आपसे ज्यादा मेहनत कराएगा। आप देखो उसका बेनिफिट्स ओवरऑल में क्या है, राइट? वे मेरे को बहुत लोग कहते हैं कि अरे वो 100 रुपए दे रहा है और खुद 200 रुपए कमा रहे हैं, राइट? द पर्सन हु पेज मी हियर अर्न्स 200 times more than that, राइट? 500 करोड़ की डील में मुझे मिलता है सम परसेंटेज ऑफ इट, राइट? बट अगर मैं ये सोचूं कि अच्छा उससे तो मुझे सारा नहीं मिला या मुझे इतना मेहनत करना पड़ा, आप मुझे देख लीजिए, when on Tuesdays when I'm at client office, how long I work from 6 in the morning till 7 at night. Then I come back, teach you, talk to you, then I again do my studies, next day I go to office and then I lead. तो क्या मैं ऐसे घंटे के हिसाब से सोचता हूँ कि आई स्पेंट लाइक 12 hours and 33 minutes? If you think like that, you will never succeed in life, right? आप देखिए ओवरऑल आपको फायदा मिल रहा है कि नहीं। अगर आप IQVIA वाला ब्रांड यहाँ पे लगा लेंगे, 2-2.5 साल काम करेंगे, विल पैराक्सिल गिव यू अ जॉब? यस, बस दैट्स द थिंग यू नीड। Will Paraxil give you, let's say from 3 lakhs, will they give you 4.5 lakhs? Perfect. Go there. Work in Paraxil 6 months, 1 year, 1 year along. Will TCS give you a job? Yes, they will give you for 7 lakhs. Take that. TCS में 1-1.5 साल निकालिए, will give you some other company give you a bigger job? Go there. Right? 12 घंटे काम करा रहे हैं, कुछ गलत नहीं करा रहे। 12 क्या, मैं तो बोल रहा हूँ 16 घंटे काम करो। काम करके सिर्फ अपना नहीं, बॉस का भी काम करो। इतना काम करो कि लोग बोले कि यार अगर मुझे इसको यूएस भेजना है, आई विल सेंड दैट गाय, ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट, ही इज द मोस्ट हार्ड वर्किंग, ही इज द वन, इफ आई टेल हिम टू वर्क टिल 12 o'clock at night, ही विल। जो आपने कभी बॉलर को देखा है? एवरीबडी इन इंडिया वांट्स टू बिकम अ बैट्समैन, राइट? बिकॉज यू गेट टू हिट 4, you get to hit 6, right? But have you thought batsman only needs one ball to get out and bowler has got 6 opportunities every over to get him out? तो किसका chances is better? So Rudro, your chances will improve. You only need one job in US, Australia, South Africa, England, any other place. One chance, you'll be earning 70 lakhs, 1 crore rupees. Don't leave that opportunity. अभी क्या ही उम्र है आपकी? 20 साल, 21 साल, 10 साल काम करो ना। जब तक आपकी शादी नहीं होती, पहला बच्चा नहीं होता, तब तक you work 12 hours a day. Make your career such that by that time you are already a champion, right? जहां पे भी आपका घर है, हावड़ा, कोलकाता, जहां पे पैसे भेजोगे, 10 लाख रुपए एक ट्रांसफर में भेजोगे, राइट? दुनिया आपके पैरों के तले रहेगी। एवरीबडी हु हैज रीच्ड अ पोजीशन एंड टॉप, वो मेहनत करके ही पहुंचे। आप विराट कोहली से पूछिए वो कितने घंटे नेट्स में बैटिंग करते हैं। जब वो 16 साल के थे, वो कितने घंटे बैट करते थे। आप शाहरुख खान से पूछिए एक रोल के लिए प्रिपेयर करने के लिए कितना टाइम इन्वेस्ट करते हैं। एनीबडी हु वांट्स टू बी एट द टॉप पोजीशन ऑफ देयर करियर्स, व्हाटएवर दैट फील्ड भी, अगर आप माधुरी दीक्षित से पूछे कि कितना घंटे डांस करते थे,
Everybody will tell you 12-13 hours is okay. We should do 16-18 hours. So go ahead, this is your time now. ये आपका टाइम है. बहुत लोग ऐसे हैं जिनको आपकी जैसी आईक्यूविया में नौकरी नहीं है, उनके बारे में सोचिए. डोंट थिंक कि हाउ मेनी आवर्स आई एम पुटिंग इन. थिंक यू आर बेटर इन लाइफ देन सो मेनी पीपल हु डिड नॉट गेट अ जॉब इन आईक्यूविया, right? Because that person after 10 years in IQVIA or in different other fields will have this much difference. You will be here and the whole world will be here. Work your 12 hours today. Next interview date, Saturday. वैल्यूएबल वर्ड्स विल वर्क हार्ड. बिल्कुल बिल्कुल. ये ना नजरिया की बात होती है. अगर मैं सुबह को उठ के सोचूं उफ मेरा बॉस मुझसे काम करा रहा है, देन पूरा डे आपका नेगेटिव माइंडसेट हो जाएगा. आप अगर अपना नजरिया बदले और कहे कि आज तो मैं तोड़ दूंगा, 12 क्या मुझे 14 घंटे लेके आओ, आई विल डू इट, आई विल शो इट टू यू, राइट? वॉश योर फेस विद अ नाइस फेस वॉश, गो बैक एंड वर्क हार्ड अगेन. गो टू योर बॉस एंड से आई एम नॉट टायर्ड, और 2 लगाइए, और 2 घंटे मुझे दीजिए, राइट? यू विल बिकम बॉसेस फेवरेट. जब कभी भी कोई मुसीबत आएगा, यू विल बी द फर्स्ट पर्सन अप्रोच की रुद्रो कैन यू हेल्प मी. वही आपको बनना है, राइट? और ये करते 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 एक ऐसा स्टेज आएगा कि लोगों को आप पे कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि वॉट एवर बी द प्रॉब्लम, इफ आई गो टू रुद्र ही विल सॉल्व माई प्रॉब्लम. दैट्स इट. यू वॉन्ट टू बी इन दैट स्टेज ऑफ लाइफ वेयर एवरीबडी ट्रस्ट यू, दे बिलीव यू. आप खुद देखेंगे योर ग्रोथ्स आर कमिंग. मैनेजर विल रीच आउट कि यार मेरा काम कर दे. सीनियर मैनेजर विल रीच आउट, मैंने तेरे बारे में बहुत सुना है, यू डू दिस वर्क. फिर भी आपको दिक्कत होगी, दैट वर्क विल नॉट बी इजी. देन अगेन यू हैव टू स्ट्रगल फॉर 12 आवर्स. मैं अपने इतने साल के करियर में आई हैव डन हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट वैराइटीज ऑफ वर्क. सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, बट हर बार जब मैं नई चीज करता हूं, राइट, आई एम नॉट अ मास्टर इन दैट फील्ड. अभी जो प्रिया ने मुझे क्वेश्चन पूछा, हेल्थ कोच, सो आई डोंट नो. मुझे भी सीखना है, मुझे भी जानना है. And it's not easy when you're in a senior position and you have zero knowledge. You again have to figure it out, right? So it's not easy, but the money is in doing the difficult work. If you want 20,000 rupees for the rest of your life, do anything you like. If you want to have 2 crores rupees a year, then you have to become that person. चलिए, बहुत बढ़िया. अब I need 2 help. मुझे 2 help चाहिए आप लोगों से. I'll be very quick about it. देखिए, हमने बोलपुर में we tried to contact different photographers, videographers. They're asking astronomical price, right? उतना पैसा देंगे तो आपको हमको like we have to increase our prices. So what I am thinking, ये मेरी suggestion है. आप में से बहुत लोगों के पास कैमरा होगा, प्रोफेशनली आप लोग फोटोग्राफी करते होंगे. We will pay you some money, right? Because हमने अगर आपसे पैसे लिए हैं तो वी हैव टेकन इट थिंकिंग कि हाँ फोटोग्राफर इतना लेगा, वीडियोग्राफर इतना लेगा, राइट? सो वी विल गिव दैट मनी टू यू. बट आप में से अगर कोई अच्छा फोटोग्राफी करते हैं, वीडियोग्राफी करते हैं, लेट्स से रुद्रो और शोमिक और शुजॉन, अगर आपके पास किसी के पास अच्छा कैमरा है, आप वो काम उस दिन के लिए कीजिए. वी विल पे यू फॉर इट, राइट? सो दिस इज माय अर्नेस्ट रिक्वेस्ट. आई डोंट नो, मे बी आप लोग को किसी को अच्छा लगता है, आपके पास अच्छा कैमरा है, या आप लोग फोटोग्राफी का शौक है, right? Please raise your hand. This is what I said, that if you are from CCOM Skills University, if you're in Bolpur, 1 or 2 people, whoever has got time, please, WhatsApp me. Let's discuss, right? It will be paid work. It will not be an unpaid work. मैं आपको पैसे दूंगा उसके लिए, right? But आपको थोड़ा help करना है to do the photography how we want it, to do the videography how we want it, right? हमारा एक particular style है, मैंने आप लोगों के साथ videos share किए हैं. I want it in that way only. And ऐसा नहीं है कि आपको 100% वैसा करना है, बट एटलीस्ट वो थीमेटिकली आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज इट दैट आई एम आस्किंग, राइट? मेरे को एक फोटोग्राफर से बात हो रही थी, वो बोले हाँ सर, हम ना चीफ गेस्ट का पूरा वीडियो निकालेंगे 2 घंटे का. आई सेड आई डोंट वांट दैट. दिस प्रोग्राम इज नॉट फॉर द चीफ गेस्ट. इस प्रोग्राम में द चीफ गेस्ट इज योर पेरेंट्स, राइट? यू हैव टू टेक द पिक्चर्स ऑफ योर पेरेंट्स. You have to take the video of your parents कि उनको कैसा लगा आज का दिन, जब उसका आपके बेटी को या बेटे को जब सर्टिफिकेट मिला. हाउ डिड यू फील? सो द वीडियो इज अबाउट taking their emotional photos, their videos, right, their smiles. That is what I want. अगर आप, मैं जो 2-2.5 मिनट का एक वीडियो आपके साथ लोगों के साथ शेयर किया है, you will see it has got interview of parents, it has got interview of students, it has got smiles of the people. हमारे फोटोग्राफ्स में और वीडियो में वो कैप्चर करना चाहते हैं हम.
राइट? अच्छा, वीडियो ग्रुप में तो मैं डाल दूंगा, बट आई डोंट थिंक कि मैं जब इंग्लिश में लिखता हूँ बहुत लोग नोटिस नहीं करते या पढ़ते नहीं है या उनको समझ में नहीं आता. सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग इट टू यू डायरेक्टली फेस टू फेस. इट विल बी अ पेड वर्क, आपको पैसे मिलेंगे इसके लिए. दूसरा, आपको मैं बता दूंगा कि कैसे मुझे फोटो चाहिए. जैसे कि एवरी स्टूडेंट देयर हैज टू बी मिनिमम 3 फोटोग्राफ. वन, व्हेन ही गेट्स द सर्टिफिकेट. टू, विद हिज पेरेंट्स विद द सर्टिफिकेट. थ्री, ग्रुप फोटो. राइट? तो हमारे पास 27 स्टूडेंट्स है ऑन द ग्राउंड. सो 27 इंटू 3, 84 फोटोग्राफ्स आर नीडेड. ठीक है? वीडियो वीडियो 2-3 मिनट्स, हाँ, चीफ गेस्ट का भी आप भाषण जो है वो आप रिकॉर्ड कर लीजिए, दैट्स ओके. बट मैं चाहता हूं कि जब आप गाउन पहने, जब आपके माँ बाप आपके दे टच योर फेस व्हेन दे ब्लेस यू, आई वांट फोटोग्राफ वीडियो ऑफ दैट मोमेंट. That moment is the special moment. The reason we are spending money is to capture that beautiful moment, right? The chief guest in that program is your parents, not even you. आपका काम है जॉब निकालना, उसके लिए मैं और आप दिन रात पढ़ाई करते हैं. बट वो वाला दिन, इट इज ओनली मेंट फॉर योर पेरेंट्स. You need to make them very happy, and we need to capture those essence of those moments. ठीक है? अब आप लोगों को 12 लोग आप लोग हो, प्लीज टेल योर अदर फ्रेंड्स. आप लोगों में से पता होगा कि हु इन योर क्लास इज लाइक गुड इन फोटोग्राफी, हु इज गुड इन वीडियोस, राइट? आई डोंट नीड एन एक्सपर्ट, राइट? वो बाद में मैं और तौफीक मेहराब हम लोग बैठ के एडिट कर लेंगे, राइट? बट वो जो मोमेंट्स है उसको आप प्लीज, जिसके पास भी कैमरा है अच्छा, अगर अच्छा डीएसएलआर है वगैरह वगैरह, ब्रिंग दैट, शूट दोज मोमेंट्स एंड शेयर इट विद अस. ठीक है? पता नहीं आप लोगों को कितना समझ में आया. नोबडी इज राइटिंग एनीथिंग ऑन द चैट, सो शायद सब लोग सो गए, राइट? Whoever, I don't know, CCOM Skills University में if somebody has a camera, CIPT somebody has a good camera, bring it, right? Or yeah, I'm even willing to pay. अगर माइक्रोफोन वगैरह लगते हैं, we will get it, because we want high quality audio, so that when you ask the parents how are you finding it. এই তো অমিত কুমার দাস তো আমি জানি খুব ভালো ফটোগ্রাফি করে. সৌমিকও তো খুব ভালো ফটোগ্রাফি করে. তো সৌমিক আর অমিত, তোমরা যদি এটা চার্জটা নাও, আর বাকিরাও যদি থাকে, বাকিদের ব্যাপারে জানি না, অন্য কেউ যদি করতে চায়, প্লিজ এগিয়ে এসো, বলো, একসঙ্গে মিলে ব্যাপারটাকে করি. এই তো সৌমিক আর অমিত কুমার দাস, তোমাদের দুজনকেই আমি রিকোয়েস্ট করছি, আর বাকিদেরও রিকোয়েস্ট করছি, যদি তোমাদের কাছে ভালো ক্যামেরা থাকে, তোমরা যদি সেদিনকার পারো ফটোগ্রাফি আর ভিডিওগ্রাফির দায়িত্বটা নাও. তোমাদের সঙ্গে আমি একটু মাঝে মাঝে কথা বলে তোমাদেরও কোচিং দেবো, যে কিভাবে আমি চাইছি ভিডিওটা তোলা হোক, কিরকম ভাবে আমি চাইছি মোমেন্টটাকে ক্যাপচার করা হোক, রাইট? এবং এটার জন্য ইট ইজ নট, তোমাকে ফ্রিতে করতে হবে না, আমি পয়সা দেবো. ওই পয়সাটাই, যেটাই যে তোমরা 1450 টাকা খরচা করেছো এই সার্টিফিকেটের জন্য, ওটাতে আমি কোনো প্রফিটের ব্যাপার নেই. যেটা আসছে সেখান থেকেই যতটুকু হয় তোমাদের দেওয়া হবে. হ্যাঁ, যদি ক্যামেরা থাকে তোমরা তো নিয়ে এসোই ডেফিনেটলি. মোমেন্টস গুলো আমি চাইছি ক্যাপচার হোক. যেরকম ধরো রুদ্র, তোমরা সবাই একসঙ্গে ট্রেনে আসবে, রাইট? তো আমি চেষ্টা করছি যে আমরা একটা ব্যানার বানাবো, যাতে তোমরা, ইফ অল ফ্যামিলিজ, অল দ্য স্টুডেন্টস আর টুগেদার, রাইট? সো ইয়োর মোমেন্টস ইন দ্য ট্রেন, সেইগুলো যদি তোমরা একটা ভালো ক্যামেরাতে, স্টেবল ক্যামেরাতে, এরকম ফোন এরকম করে নড়লে হবে না কিন্তু, রাইট? সো অন আ গুড ক্যামেরা, ইফ ইউ ক্যাপচার দোজ মোমেন্টস, যে হাউ ইজ ইয়োর ফিলিং from the time you boarded the train till the time you landed here, then you came to the, every moment, that special moment is required. আমি বারবার বলছি যে এই সার্টিফিকেট সেরিমনির দিনটা is not for me or for you, this is for your parents, so make it as special as possible. আমার কাছে পড়ে আর কিছু চেঞ্জ হোক না হোক, একটা জিনিস আমি তোমাদের গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি, তোমাদের যে ভিশন আছে, কোনো জিনিসকে চিন্তা করার যে ভিশন, কল্পনা করার যে ক্ষমতাটা, সেটা অন্তত আমার সঙ্গে থেকে তোমাদের বেড়ে যাবে. গুড. যারা যারা পারবে আমাকে প্লিজ হোয়াটসঅ্যাপ করো, আর সেখান থেকে আমরা কথা বলবো. আরো আমার কিছু জিনিস ডিসকাস করার আছে. কাল পরশু একদিন আমি ক্লাস করে, সেই ক্লাসটা হবে, ক্লাস নয়, একটা মিটিং হবে তোমাদের সঙ্গে ডিসকাস করার জন্য কে কোন দায়িত্বটা নেবে. ফর এক্সাম্পল, আমাদের একজনকে চাই যিনি মাস্টার্স অফ সেরিমনি করবে, মানে বলবে. তো তোমাদের মধ্যে থেকেই যে ভালো বলে সে, তোমাদের মধ্যে যে ভালো গান গায় সে, তোমাদের মধ্যে যে ভালো ইনস্ট্রুমেন্ট বাজায় সে,
সবাইকে আমরা একত্রিত করে প্রোগ্রামটাকে ভালো করে অর্গানাইজ করতে চাই। তো তোমাদের সবার পার্টিসিপেশন দরকার, রাইট? বারবার বলছি, প্রোগ্রামটা তোমাদের বাবা মাদের জন্য। আমার কাজ তোমার পড়ানো, তোমার কাজ ভালো চাকরি পাওয়া, রাইট? তুমি আমাকে তার জন্য মিষ্টি খাওয়াবে আলাদা করে, কিন্তু এই দিনটা তোমার বাবা মার জন্য। দে শুড ফিল স্পেশাল when they come there and they see you taking the photographs. থ্যাংক ইউ। ওকে সৌমিক, আমাকে একটা মেসেজ করো হোয়াটসঅ্যাপে, তোমার সঙ্গে আমি একটু ফোনে ডিরেক্ট ওয়ান অন ওয়ান কথা বলি। যদি তুমি আর অমিত এই ব্যাপারটাকে পুরোটার দায়িত্ব নিয়ে করতে পারো তাহলে খুব ভালো হয়। ঠিক আছে? আচ্ছা, তোমরা সবাই ভালো থাকো, শরীর ভালো রাখো, মন ভালো রাখো, বাবা মার খেয়াল নাও। কালকে তো ডেফিনেটলি কথা হবে না, বিকজ আই বি থ্রু আউট দ্য ডে অফিস, এরকম সময় ফিরবো হয়তো, সো কালকে কথা হবে না। বাট whenever next we are speaking, we will discuss further. চলো, টেক কেয়ার, বাই, ভালো থাকো, পরে কথা হবে। বাই এভরিওয়ান।